Hello students, let us start with our first example of NCERT textbook. First of all, we will see the question that what is given. Do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle? ये तीनों points triangle पहले बनाते हैं कि नहीं बनाते? If so, name the type of triangle. And if they are making a triangle, then name the type of triangle. Now there are so many types of triangle. We know only we had studied in the previous standard. There are scaling triangles, right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle. Right? One more type is there, isosceles right angle triangle. Okay? So these are the certain types of triangle that we had studied in the previous standards. Now this hint is written for you, which is not given in the question. Question में आपको दिया नहीं है. Example का जो textbook में question है उसमें आपको hint नहीं दी है. And in exam also this hint is not available for you. Now let us read the hint what is written here. If sum of any two of these distances is greater than the third distance, then it forms a triangle. It means पहले जो है वो हमें हर एक पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है. And if any sum of any two distance is greater than the third one. क्या लिखा है? Sum of any two distance is greater than the third one. Third distance से ज्यादा है, then it forms a triangle. Again, this hint you had already studied in 9th standard, but many of the students are not able to remember these lines, so I have written here. Okay. So now let us do our sum. Again, we have to find the distance. Now there is not any formula to find the distance between the 3 points. अब 3 पॉइंट्स दी है, उसका डिस्टेंस फाइंड करने की कोई फॉर्मूला है नहीं. पहली बात तो राइट, तो डिस्टेंस जो है वो 2 पॉइंट्स के बीच में ही फाइंड किया जाता है. सो सपोज दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर B and this is your point C. Now if this is your point A, then it will be x1 y1. पॉइंट B के लिए x2 y2, पॉइंट C के लिए x3 y3. मान लो कि कोई फोर्थ पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x4 y4. Understood? Okay. Now I have already written here the AB square. We know only the formula of AB square, x1 minus x2 square, y1 minus y2 square. Put down the values. x1 means 3, minus is the sign of formula, x2 means 2, sorry, x2 is this, minus 2, plus y1 is 2, minus फॉर्मूला की साइन, यहाँ पे माइनस की साइन फॉर्मूला की. ओके. y2 itself -3, so instead of y2 I written -3 inside bracket and whole square. Let us solve this. 3 minus minus plus 2 square plus 2 minus minus plus 3 whole square. 3 plus 2 obviously 5 whole square plus 5 square. 5 square plus 5 square, 25 plus 25, it will be 50. But again, this is the answer of AB square. We need to find the answer of AB. So therefore AB will be root of 50. Right? यहाँ से square निकल जाएगा, यहाँ पे square root आ जाएगा. So root of 50. Now how to find the root? That also we had studied in 9th standard. Okay, right now here the root of 50 is approximately 7.07. Okay, that is approximately 7.07. Now let us find the second distance. It means distance between B and C. So BC square. Okay, now BC square की फॉर्मूला क्या होगी? फॉर्मूला आप अपने हिसाब से बना लो. Because the name of the coordinates of B के coordinates क्या है? x2 y2. ओके. C के coordinates क्या है? x3 y3. तो फॉर्मूला क्या बनेगी? फर्स्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट माइनस फर्स्ट. फर्स्ट क्या है? x2 माइनस इसका फर्स्ट, it means x3 होगा. Okay, so I am writing here x3 whole square. In the same way, y2 minus y3 whole square. Understood? You can make changes like this in the formula. There is not any problem. x2
x2 क्या है -2 है, सो -2 माइनस x3 क्या है 2 है, y2 यानी -3 minus y3 is 3 whole square. Okay, now solve this. -2 again it will be -2, so -2 whole square plus -3 whole square. Now if you solve this, -2 minus minus addition, आपको एडिशन करना है तो यहाँ पे हो जाएगा -4 होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -3 -9 होल स्क्वायर. If you solve this, -4 whole square it means 60 plus -9 whole square. Sorry, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 it means एडिशन करना है तो 3 plus 3 क्या हो जाएगा 6. ओके, सो -6 square is, it means 36. If you add this two, it will get answer 52. 4 square is 16, 6 square is 36. दोनों का एडिशन करो तो आंसर क्या आएगा 52. But this is the answer of BC square. We need to find the answer of BC. So therefore BC is root of 52, and if you find out the root of 52, then it will be approximately 7.21. Okay, now third one, AC square. Okay, अब AC square की फॉर्मूला आप खुद ही फाइंड कर लो. क्या है AC square? A के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3. तो फॉर्मूला क्या बनेगी 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट मीन x1 minus x3. Understood? Okay, so x1 minus x3 whole square plus y1 minus y3 whole square. Very simple. Understood? Okay, so now put down the values. x1 is 3, x3 is 2. So 3 minus 2 whole square plus y1 is 2 and y3 is 3. So 2 minus 3 whole square. 3 minus 2, it means 1. So 1 square plus 2 minus 3 is -1 whole square. 1 square is 1 and -1 square is also 1, and 1 plus 1 answer is 2, which is the answer of AC square. But we need to find AC. So AC will be √2, and the answer of square root of 2 is 1.41 approximately. Now अकॉर्डिंग टू अवर हिंट, आप हिंट देख लो क्या है. कोई भी दो डिस्टेंस का एडिशन करो और तीसरे डिस्टेंस से ज्यादा होता, राइट, देन इट विल फॉर्म ए ट्रायंगल, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल. सो हियर डिस्टेंस का एडिशन बोला है, ये स्क्वायर की वैल्यू का नहीं बोला है. ओके, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है 7.07, ये और ये डिस्टेंस का एडिशन कर दो तो ऑब्वियसली 7 plus 7 अराउंड 14 से ज्यादा आएंगे. पॉइंट का हम एडिशन नहीं करते अभी. 7 और 7 14, तो ऑब्वियसली 14 इज ग्रेटर देन दिस 1. ओके, नाउ लेट अस टेक एनी टू. अब ये दोनों देख लो. 7 plus 1 8 which is greater than this 7. Again 7 and 1 8 which is greater than this 7. So here this condition is satisfied. ये जो हिंट में one type of condition दी है that is satisfied, and so we will write here yes. Sorry, before that let us write that condition one more time. Here sum of, क्या लिखा है, any two distance, sum of any two distance. Here sum of any two distance is
greater than third distance, so therefore it forms a triangle. ये जो 3 पॉइंट्स हैं, if you draw this 3 points in your graph, then it will surely make a triangle, but you are not supposed to draw. हमें कोई ग्राफ नहीं करना है. Okay? Now अब ये ट्रायंगल तो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if it is a triangle then name the type of triangle. ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा? That we can decide from this values of square. ये जो हमें AB square, BC square और AC square, वो तीनों की स्क्वायर की जो वैल्यू मिली, उसमें से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है. पाइथागोरस थ्योरम मालूम है इसका? 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, राइट? उसका स्टेटमेंट भी जो है वो हमने लिखवाया था. क्या था? if you are not able to remember, write down my words in your book. Okay? If the sum of the square of the two sides, again I am repeating, if the sum of the squares of the two sides is exactly equals to the sum of is exactly equals to the square of third side, then it forms a right angle triangle. तो वो राइट एंगल ट्रायंगल वो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट था. अगेन वन मोर टाइम, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हर बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. क्या कंडीशन है राइट एंगल ट्रायंगल की? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू square of third side, then it forms a right angle triangle. Okay? तो यहाँ पे भी ये हुआ, ये साइड का स्क्वायर क्या है? 50, BC का स्क्वायर 52, AC का स्क्वायर 2. कोई भी दो साइड का एडिशन करो, कोई भी दो साइड के स्क्वायर का एडिशन करो, तो तीसरी साइड का स्क्वायर आपको दिख रहा है कहीं पे भी? ये 50 है, ये 52 है और ये 2 है. अगेन वन मोर टाइम, ये 50 है, ये 52 है और ये 2 है. कोई भी दो नंबर आप ऐड करो तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा. कोई भी मींस इफ यू ऐड द टू नंबर्स इन सर्टेन वे that you are getting a third number, then yes, answer is yes. Which are the two numbers? This 50 and 2, then you will get 52, right? So write down first of all this much. It is very easy, you can write also afterwards. अब वीडियो को पॉज कर दो और इतना लिख डालो, बाद में जो है वो मैं इसके बाद का आंसर जो है लिखवाता हूँ. ओके? Here, the sum of squares of two sides, which are that? AB square plus AC square. 50 plus 2, it is 52, which is equals to BC square. Right? दो साइड के स्क्वायर का एडिशन is equals to the square of third side, then it is a right angle triangle from Pythagoras theorem. So therefore, from Pythagoras theorem, it is a right angled triangle. Right angled triangle. Understood? So this was your first example of your NCERT textbook. Write down and then afterwards we will do the second example. Okay?
Okay, so now let us start with our second example of NCERT textbook. So that the points 1, 7, 4, 2, -1, and -4, 4 are the vertices of a square. वो square के vertices है. Vertices means point. Square के point है. It means they are forming a square. वैसा हमें prove करना है. So that, okay. Now there are two properties of square. Which are the two properties of square? First one, the length of all the four sides of a square are equal. One more time, the length of all the four sides of the square are equal. Then this property also belongs to rhombus. ये जो property है वो rhombus की भी है. The rhombus में भी चारों sides जो है उसकी length होती है क्या होती है? Same होती है. Then which is the property that makes different rhombus and square? वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो rhombus और square को जो है वो डिफरेंशिएट करती है? The property is that the length of diagonals of the square are equal. One more time, ये जो square के जो diagonals है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम. rhombus में नहीं होती. This is your rhombus, right? rhombus में भी चारों साइड्स सेम होती है, यहाँ पे भी चारों साइड सेम होती है. बट यहाँ पे जो diagonals की लेंथ होती है, you can clearly see that it is a very much less and it is a big diagonal, right? इसकी जो लेंथ है obviously big है, इसकी जो है वो small है. Understood? But यहाँ पे क्या है? दोनों की लेंथ क्या है? Same. If the length of diagonals are same, then it is square. If they are not same, then it is a rhombus. Okay? So we are going to find 6 distance. हमें जो है वो 6 distance find करनी. हमें पहले तो ये बताना होगा ना कि ये चारों sides जो है, it means ये length जो है, ये BC का जो distance है, ये CD का जो distance है और ये DA का जो distance है, वो चारों points का distance है वो same है. It means first distance formula, second time distance formula, third time, fourth time. ये चारों length find करके we cannot say that it is a square, right? एक बार हमने ये चारों length find कर ली तो हम ये नहीं कह सकते कि ये square है. If they are same, then it may be rhombus also. So next thing we have to find is the distance between the point AC. ये AC find करेंगे तो it means हमने क्या find किया? Diagonal की length find की. समझ में आया? In the same way, if we find the distance between BD, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड की. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला 6 times. One for AB, second for BC, then CD, then DA, fifth for AC and sixth for BD. Understood? Okay. Now let us start with our sum. Now one more thing. हर एक बार हम ये डिस्टेंस फार्मूला हमेशा बड़ा सम हो, एक दो बार हो तो बात अलग है. पिछले का फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा ट्रायंगल में, उसमें हमने 3 बार जो है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई की थी, राइट? अब यहाँ पे 6 टाइम्स करनी, तो हर एक बार फार्मूला लिखनी जो है वो अब कन्वीनियंट नहीं है हमारे लिए, इसीलिए हम डायरेक्ट नंबर ही अप्लाई करेंगे. एंड पे अटेंशन हाउ टू अप्लाई द नंबर. So this is your point A, B, C and D. So first of all, we will write our points so that it will be easy for us. So A point के coordinates क्या है? 1, 7, right? So A क्या होगा? x1, y1, 1, 7. B क्या होगा? x2, y2. That will be 4, 2. ओके. C क्या होगा? x3, y3. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -1, -1. D क्या हो गए? x4, y4. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -4 and 4. Understood? Okay, so now let us start with our first distance, that is AB square. AB स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद AB फाइंड कर लेंगे. सिंपल. AB स्क्वायर में क्या आएगा? डायरेक्ट हमें नंबर ही अप्लाई करने. फर्स्ट माइनस फर्स्ट
ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड वो भी ब्रैकेट में और होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 क्या होगा? माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5 होल स्क्वायर। Minus 3 square it will be 9 and 5 square it will be 25. If you add you will get 34, which is the answer of AB square. But we need to find AB. So therefore AB will be root 34. Understood? AB will be root 34. Now we are going to find BC square. अब दूसरा डिस्टेंस हमें क्या फाइंड करना है? ये BC फाइंड करना पड़ेगा। ये AB क्या आया? रूट 34 आया। अंडरस्टूड? अब हमें BC फाइंड करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस BC स्क्वायर। ओके, सो BC स्क्वायर में भी सेम वे, डायरेक्ट फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 4 माइनस C का फर्स्ट क्या? -1। सो 4 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस। ओके, पे अटेंशन हियर। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 4 माइनस, ये तो माइनस की साइन फॉर्मूला की मालूम है ना, x1 माइनस x2, बट हियर आवर ओरिजिनल सेकंड वैल्यू इटसेल्फ माइनस, जो दूसरी वैल्यू है वो खुद ही माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस की साइन फॉर्मूला की सेकंड वैल्यू C की सेकंड वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 होल स्क्वायर। है ना सिंपल? डायरेक्ट वैल्यू पुट करना विदाउट फॉर्मूला। ओके, नाउ सॉल्व दिस। 4 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व दिस। 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 प्लस 9. What will be the answer? Okay, now here you had understood the property of square. अब आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई. What is the difference between square and rhombus? This is rhombus and this is square. Again, before rubbing, we will revise one more time. What is the difference between, how can you differentiate between square and rhombus? If the length of diagonals are same, then it is a square, otherwise it is a rhombus. Condition apply, the length of the side should be same. दोनों में ये चारों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम आनी चाहिए, राइट? ओके, (25 plus 9) it will be 34. That is the answer of BC square. So therefore BC will be root 34. ये हमारी दूसरी साइड आई, राइट? This is the measurement of our second side. ये second side का measurement हुआ. First side का भी 34 था, second side का भी root 34 ही आया. Okay, now third side. Third side क्या होगी? AB, BC, फिर बाद में क्या आएगा? CD आएगा. If you are not able to get, draw a square here like this. A, B, C, D. ये AB find कर लिया, BC find कर लिया. Now we are going to find this CD. Okay, so CD square. CD square. CD square. First minus first. C का first है -1 और D की first value है -4. So -1 माइनस ये -4 हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. दूसरी जो वैल्यू माइनस आती है, सपोज इफ द सेकंड वैल्यू इज माइनस, देन दैट वैल्यू यू हैव टू राइट इनसाइड ब्रैकेट. If the first value is minus, then here you can write without bracket. That is not problem. Okay, now second minus second, -1 -4, -1 माइनस की जो साइन है वो फॉर्मूला की, राइट? और D की सेकंड वैल्यू क्या है? सिर्फ 4, only 4. So here I am writing 4. Understood?
ओके, नाउ ओपन दिस ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 minus minus, it means addition of numbers, so it will be 5, bigger digit is 4 and its sign is minus, so यहाँ पे आ जाएगा minus. Okay, minus plus it means subtraction, 4 minus 1 it will be 3, bigger number is 4 and its sign is plus, so no need to do the sign of plus, so 3 square plus minus 5 square, 3 square will be 9 and minus 5 square will be 25. If you add, you will get 34. 34 is the answer of CD square. So therefore answer of CD will be root 34. Understood? So therefore answer of CD will be root 34 because the square root of 34 is not possible. 34 के दो पार्ट्स क्या आएंगे, 17 2s are, तो 17 का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है और 2 का भी नहीं है. ओके, सो नाउ आफ्टर CD स्क्वायर ये फाइंड कर लिया, AB फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, CD फाइंड कर लिया, अब D बताना तो पड़ेगा ना कि साइड्स जो है, इट मींस द लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों जो साइड है उसकी लेंथ इक्वल है, वो हमें बताना तो पड़ेगा. ओके, नाउ DA स्क्वायर और AD स्क्वायर दोनों का मीनिंग सेम होता है. AD स्क्वायर और DA स्क्वायर दोनों सेम ही है. ओके, so here I am writing DA square. If you want to write AD square, then it is equal, same only. DA, D का फर्स्ट माइनस A का फर्स्ट, D की फर्स्ट वैल्यू -4 and A की फर्स्ट वैल्यू 1. So यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, if the first value is negative, then no need to write inside bracket. So -4, minus is the sign of formula, and first value of A, the first value of A is 1. So 1, understood, whole square. Now second one, second minus second. So second here is 4 and here is 7. So 4 minus 7 whole square. Okay, -4 minus 1, -4 minus 1, minus minus addition. 5 bigger number sign, bigger is 4 and its sign is minus. So -5 square plus 4 minus 7, 4 minus 7, it means -3 because bigger number is 7 and its sign is minus. -5 square is 25, 3 square is 9, and if you add you will get 34, but 34 is the answer of DA square. So therefore DA will be root 34. Understood? Now four sides are over. As we had discussed earlier, we had find out the length of all four sides which are equal. चारों साइड जो है उसकी लेंथ इक्वल है, root 34, root 34, root 34, root 34. Okay, now we are going to prove that the length of diagonals are also same. First diagonal कौन सा होगा, AC होगा, and only then it will be square. Okay, now AC square, AC square, A का फर्स्ट और C का फर्स्ट. A की फर्स्ट वैल्यू 1 minus first value of C, first value of C is minus, so that I will write inside bracket and I will apply big bracket whole square plus second value minus second value. Second value of A is 7, second value of C, that is -1, so 7 minus minus 1 whole square. Okay, 1 minus minus plus 1 plus 1 whole square. समझ में आ रहा है ना, 1 minus minus plus 1 whole square. 7 minus minus plus 1 whole square. 1 plus 1, that is 2 square. 7 plus 1, that is 8 square. 2 square is 4 and 8 square is 64. Right? 2 2s are 4 and 8 8s are 64. If you add, you will get 68. Again, 68 is the answer of AC square, but we need to find out the answer of AC. That will be root 68. 68 का रूट पॉसिबल है कि नहीं है,
Okay, let us find whether it is possible or not. 68 का 4 से डिवाइड कर लो तो 4 1 जा 4 2 and 8 okay 17 4 जा 68 सिंपल राइट 17 4 जा 68 आता है उसमें 4 का जो है वो स्क्वायर रूट पॉसिबल है और 17 का नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे therefore AC is equals to root 68 and root 68 can be written as 4 into 17 out of which the square root of 4 is possible that is 2 and 17 का root नहीं possible so we are going to write here root 17 we got our answer of AC AC का आंसर हमें मिल गया क्या मिला 2 root 17 if you write 68 only there also there is not any problem and you will get full marks so no need to worry about that now second diagonal first diagonal AC second diagonal will be BD so we are going to find first of all BD square then afterwards we will take out the square root BD square how to find distance formula लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे फर्स्ट माइनस फर्स्ट b का फर्स्ट माइनस d का फर्स्ट b की फर्स्ट वैल्यू 4 और d की फर्स्ट वैल्यू -4 so what we are going to do 4 minus 4 whole square understood okay first value of second value of b minus second value of d so 2 minus 4 whole square if you solve this 4 minus plus 4 whole square plus 2 minus 4 का आंसर -2 whole square आएगा 4 plus 4 whole square plus 2 minus 4 it means -2 whole square 4 plus 4 is 8 square plus -2 square is 4 8 square is 64 plus 4 64 plus 4 answer is 68 understood again 68 is the answer of this BD square so BD answer will be same as previous one so I am directly writing the final answer that is 2 root 17 समझ में आया okay many students will not be able to get so 68 और फिर बाद में equal to करके ये डायरेक्ट आंसर लिख डाल दे ये बीच का जो स्टेप है मैं यहाँ पे नहीं लिखता 2 root 17 understood so now here you can see that the length of all four sides are equal as well as the length of two diagonals are equal so it is a square so therefore it is a square again understood how you can tell that it is a square one more time if the length of all four sides are equal as well as the length of both diagonals are equal then you can say that it is a square understood do this sum in your fair book one more thing you will get some questions for homework from exercise 7.1 exercise 7.1 में से आपको जो थोड़े सम्स हैं वो होमवर्क पे दे दिए जाएंगे understood which belongs to this two example वो दो सम्स जो होंगे वो किसके डिपेंडेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन दिस टू एग्जाम्पल ओके सो राइट दिस इन योर book hope so you had understood both the examples thank you